Oh. 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 Visualize Mother Goddess Durga. See her in all her glory. Let's call out to Mother Goddess 11 times. Ma. 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 Rub your palms. Spread the warmth on your eyes. Open your eyes. Gurubhyo Namaha. Let's start with Kapalbhati. We'll do 3 rounds of Kapalbhati. Let's start with 30 to 50 rounds. After you're done, we can do Agnisar with exhale breath. Let's start with Kapalbhati. Forceful exhalation. When you're done, exhale and start Agnisar with exhale breath. Pull your stomach in and move your belly inside and out. When you're done, let's start with the second round of Kapalbhati. You can do 50 to 100 rounds. Do not push yourself if you have high BP. Go slow.
Once you're done, exhale completely, tuck your belly in, and let's do Agnisar. Keep your spine erect. Let's start with the third round of Kapalbhati, 50 to 100 rounds. Active exhalation. When you're done, exhale completely. Tuck your belly in. Let's do Agnisar. When you're done, just give a few seconds to observe yourself. Normalize your breath. Observe your spine. Let's start with Ujjayi Pranaya, the ocean breath, the Soham breath. Let's start now. Take the breath from your Mooladhara all the way to your Sahasrara Chakra. This, from now for a couple of rounds, we'll hold a few seconds in your Sahasrara Chakra and then in Mooladhara Chakra when you exhale. Let's move on to our next practice. That's Mahamudra. So let's
Breathe in Ujjayi breath all the way from Mooladhara Chakra. Tilt your head. Engage in Kechari Mudra. Tilt your head. Look in Shambhavi Mudra. Engage your Mooladhara. Udyan Bandh. Pull the energy from Mooladhara all the way to your Bindu and hold there for a few seconds. When you're done, you can release all the bandhas and then do your next round. Make this your last round. Let's do Mahabandha, Tribandha, the three locks, the root lock, the stomach lock, and the throat lock. Do it with exhalation, Bahai Kumbhak. Let's start the practice. Let's do 2 more rounds. Let's move on to our next practice, Mahabir Mudra. So we'll combine the last two practices. You can either start with exhalation, Mahabandha or Mahamudra.
Let's end this practice with whichever mudra you started with, Mahamudra or Mahabandha. Let's start by calling out for the Mother Goddess 11 times. Inhale. Ma. 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 You can see the Divine Mother in front of you. Invite her to come into your heart. Slowly open our eyes and do the Nyasa. Prashinyati Nyas. Let's put our hands on our head. Brahma, Vishnu, Rudra, Rishipyo Namaha, Shirase. Mouth. Gayatri, Shniknashtup, Chandrapyo Namaha, Mukhe. Heart. Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, Devatyabhyo Namo Hriday. Genitals. Aim Bijaya Namaha Guhye. Feet. Hrim Shakte Namaha Padaya. Navel. Klim Kilakai Namaha Nabhyam. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Karnyanas. Let's put an index finger and a thumb together. Om Aim Angushtabhyo Namaha. Keep the same posture. Om Hrim Tarjanabhyam Namaha. Thumb and middle finger. Om Klim Madhyabhyam Namaha. Thumb and ring finger. Om Chamundaya Namikabhyam Namaha. Thumb and the little finger, the pinky. Om Vicha Kanishtyabhyam Namaha. Now rub your palms like this. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Karatala Karak Prishtyabhyam Namaha. Let's move to Hridayanash.
Put your hands in your heart. Om Aim Pridyaya Namaha on your head. Om Hrim Shirase Swaha. Curve of your head, the Bindu. Om Kleem Shikaye Vashat. Hand crossed over your shoulders. Om Chamundai Kavachayaham. 3 fingers on either eyes and your third eye. Om Viche Netraya Vashat. Snap your fingers around your head and then let's do this. Om Hrim Om Aim Hrim Klim Chamundai Vische Astraya Pat. Aksharan Abhyas. Hand on the head. Om Aim Namah Shikayam. Right eye. Om Hrim Namah Dakshinetre. Left eye. Om Kleem Namah Vamanetre. Right ear. Om Cham Namah Dakshinan left ear. Om Mam Namah Vamakarne, right nostril. Om Dam Namah Dakshinanasaputre, left nose. Om Yam Namah Vamanasapute, mouth. Om Vim Namah Mukhe, the genitals. Om Cham Namah Guhe. Now, Diganyash for the directions. Let's start with east by snapping our fingers on the east. Om Aim Prache Namaha, southeast. Om Aim Agnyay Namaha, south. Om Hrim Dakshinay Namaha, southwest. Om Hrim Naitre Namaha, west. Om Kleem Prache Namaha, northwest. Om Kleem Vavye Namaha, north. Om Chamundaye Viche Namaha, northeast. Om Chamundaye Aishanyay Namaha, above the sky. Om Aim Hrim Kleem Chamundaye Viche Urdhyay Namaha, down to earth, Mother Earth. Om Aim Hrim Kleem Chamundaye Viche Bhumyay Namaha. Now let's do Anulom Vilom Pranayam. For Navarna mantra, inhale for 1 count, hold for 4 counts of mantra, exhale for 2 counts of mantra. If this is too much, you can do 1 count of mantra inhalation, 1 count of mantra holding, and 1 count of mantra exhalation, and then breathe in again from the right nostril. Sit with your back and neck straight. Om Aim Hrim Kleem Chamundai Viche. 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 Om Aim Hrim Kleem Chamundai Viche.
Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Complete your practice. Just absorb the vibrations that we've created. Pratik ji, Yes. will you do the kavacham? Yes. Thank you so much, Gopika ji. Such wonderful instructions. Now I'll be taking forward. Please do help me out if I miss something. So now we'll start with Shri Devyai Kavacham. Atha Shri Devya Kavacham. Om Asya Shri Chandika Kavachasya Brahma Rishi Anustupa Chandaha Chamunda Devata Angyanyasokta Mataro Bijam Digabandha Devatastatvam Shri Jagdamba Pratyarthe Shaptasati Pathangatven Jape Viniyogaha Om Namaschandikaye Markande Uvacha Om Yadguyam Paramam Loke Sarvaraksha Karamnam Yanna Kasya
कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गृह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमिति चैव भायार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृक्षवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शाक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानित्थं देवानां च हिताय वे नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मा देवी दुष्प्रेष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अस्तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्षेत् स्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुदयोतीनि रक्षे धूमामूर्धेन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्वो मध्ये यमघण्टा च नासिके शाङ्खिनी चाक्षुमोर्मध्ये श्रोत्रयोर्धरवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीव्यां च सरस्वती दन्तानं रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चाण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी
नीलग्रीवावहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गनिरक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिकामेन्द्र गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् चानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी कुल्फयोर्नानि सिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पाङ्गुलीषु शिरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान् द्रष्टार्कराली च केशाश्चैर्वोर्ध्व केशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसा नास्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वाला भेदया संदिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनों बुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्त्वं चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यक्षकीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सर्वकामिकः ययं ययं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निशीचतं परमेश्वरयमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः यः पठे प्रत्यो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् शतं साग्र मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजलाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिनस्य महाबलः ग्रहभूतपिशाचस्य पिशाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः
ब्रह्म राक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचैर्हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशेलवनकाननम् तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ नाउ वी विल चैंट माँ 3 टाइम्स हम माँ का उच्चारण करेंगे 3 बार मेरे साथ लंबी गहरी सांस लीजिए माँ हृदय से पुकारेंगे माँ को माँ आखिरी बार माँ धीरे से अब हम आंखों को खोलेंगे आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जिस स्पीड में अ, पाठ किया गया हो वो कंफर्टेबल रहा होगा। तो हम अगले पूर्वाभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को थोड़ा स्लो कराना है तो कृपया आप बता सकते हैं। अथ अर्गला स्तोत्रम् ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जय त्वं देवी चामुण्ड जय भूतपहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते मधुकैटभविध्वंसी विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि निशुम्भशुम्भनिर्नाशी त्रिलोक्यशुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्गगृयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तुवद्भयो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि देवी परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, विदेहि देहि कल्याणं, विदेहि विपुलां श्रियं, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, विदेहि त्वविष्टां नाशं, विदेहि बलमुच्चके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, सुरासुरशिरोरत्न निगृष्टचरणेऽम्बिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तच्च मा कुरु, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, देवी प्रचण्डदौर्दण्डे दैत्यदर्पणनिषूदिनी, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, प्रचण्डदैत्यदर्पाग्ने चण्डिके प्रणताय मे, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जयि, चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, कृष्णेन संस्तुते देवी शशवद्भक्त्या सदाम्बिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, हिमाचलसुतानाथ नित्सु हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, इन्द्राणि पतितसद्भाव पूजिते परमेश्वरि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, भार्यां मनोरमा देहि मनोर्वृत्तानुसारिणीं, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, तारिणी दुर्गसंसार सागरश्च लोदभवे, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः, सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम्। अब हम माँ का उच्चारण फिर से 3 बार करेंगे। इस बार पूरे हृदय से, दिल से पुकारिए माँ को और माँ की तस्वीर को अपने सामने लाइए। इमेजिन माँ, visualize माँ, Durga माँ. If not Durga माँ, you can imagine your own mother and call her out from the deepness of your heart. Rub your palms and put your hands on your eyes. Thank you. Now we'll move to the next part, which is Kilak Stotram. If anybody has to share and say anything, please feel free to share before we start. Oh, okay. Looks like we can start now. Uh, अथ कीलकस्तोत्रम् ॐ नमश्चण्डिकाये मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धत्युज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेद विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्यत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वास्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवन्तां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रवे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम यथा वनियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटस्य तस्य भयं कवापि ह जायते नापमृत्युवशं वंशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कृवाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च याक्ति छिद्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष सतुत्ये सा न किं जनः Now we will chant माँ again 3 times. हम माँ को फिर से पुकारेंगे हृदय से अपनी आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा से माँ के चित्र को अपने सामने लाके with complete devotion bring Ma's visualization and chant माँ. Take a deep breath. Inhale. माँ. Now rub your palm and put it on your eyes. And this concludes our today's session. And I would like to call upon Gurudev and Gopika ji to bless us for this sadhana before we move ahead with our day. Very nice, very perfect. I am very proud of you both.
You did very good, Gopika. Very nice pranayama session. Very good. And also, Pratik, you did very good chanting. A little more improvement, but it is perfect. It is very good. And by this way, I also want few names from your side. If anybody want to chant in front of all of us, give your name to Pratik ji. And I want everybody to learn. So please come forward and say, Guruji, yes, today I will do the pranayama session or the stuti or stotram session. So please come forward and you try to do this together. So by this way, we all should learn all these practices. So one by one, I request everyone come and become the lead and do the process. सब लोग आओ सीखो ये अर्गला कीलक कवच. मैं संडे के सेशन में अर्गला कीलक कवच का अर्थ समझाऊंगा. मैं उसका मतलब बताऊंगा, उसका मीनिंग समझाऊंगा. So in coming Sunday, I will give you the meaning of Argala Kilak and Kavach in detail in the Sunday session. So thank you everybody for your nice prayer to Goddess Mother. Mother must bless you all. So thank you very much. Have a nice time. Have a nice day. Thank you so much, Guruji. Thank you, Pratik ji. Thank you so Thank much. you, everyone. धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गोपिका जी, प्रणाम गुरुजी, प्रतीक जी, प्रणाम। धन्यवाद.